to march against what recently happened at Ramjas College in Delhi University. So we'll try to speak to students here, and just to remind you, this is a citizens march and not just a students march. So a lot of members of the civil society, parents, professors, teachers and common citizens have joined the students who are protesting the violence that was unleashed on the campus allegedly by the ABVP Vidyarthi Parishad, which is the student wing of the RSS. So I'll just show you some visuals of the protest, and then we'll try to speak to as many people as we can. As you can see, that's a long line. Initially, I estimate there were around 500 people, but more are pouring in. More students are yet to join. Recently, there was another march in the Delhi University campus itself, organized by students of the Delhi University, where around 3,000, in fact more than 3,000 people protested and tried to reclaim their university space, as they say that they don't feel safe in the campus anymore. So we'll try to speak to more people. So I have with me Narayan, who's the professor in St. Stephen's College and is also the president of the Delhi University Teachers Association. So I'll just try to speak to her and ask her why she is here. मैम, ये मार्च आपको क्यों लगता है कि जरूरी है और आपने क्यों ज्वाइन किया ये मार्च? After the shameful incident in Ramjas College, where a peaceful seminar was disrupted on a theme which was about a culture of protest, and different speakers were called by the organizers to express their point of view. Then a group of students affiliated with the ruling party took the law in their own hands and started indulging in violence. How can you allow such anti-social elements to do this kind of thing with impunity? Instead of following the rule of law, the police instead, at the behest of obviously people in the ruling party, allowed the miscreants to do whatever they wanted, and then later on even joined them. They joined them in the violence against students. I know because personally about 60 students of my college, St. Stephen's College, which are not politically affiliated to anyone, and they were first time protesters in the peaceful march. They were beaten up black and blue by the policemen themselves, and we had evidence of that also on video. And I personally witnessed some of the violence that was taking place. So the point here is that instead of bringing such elements in, the government spokespeople are continuously giving even more provocative statements and actually attacking the victims, saying that how dare they talk about Azadi. If they don't talk about Azadi, then will they talk about Gulami? Azadi is a word that they may not relate to this particular ruling party because they were not part of our Azadi's Andolan. But it is dear to every Indian, and every Indian has not really experienced Azadi in this country. The poor have not, the marginalized have not, the tribals have not, the women have not, the people who are hungry and unemployed have not experienced it. People who don't get a chance to get education because they don't have enough money have not experienced it. People who are, the Dalits who have been crushed by this caste system, they have not experienced it. So they have a right to ask for Purna Azadi. Jai Prakash Narayan also asked for Purna Azadi, and we are also asking for Purna Azadi, and Azadi from Gundagardi, which the ruling party has unleashed on us to keep us quiet and to fulfill their nefarious anti-national, anti-constitutional agenda. Okay, so some professors were also attacked in the Ramjas incident. Yes. Why do you think the professors were attacked, and do you as a teacher yourself also feel unsafe now in the campus? Yes. If you look at any dictatorship anywhere in the world, then the first places that are attacked are universities and professors. If Hitler did it, it is happening in Turkey, it is happening wherever you have such dictatorships, because that is the most dangerous thing for them. Ideas are the most dangerous, and universities generate ideas, and professors are the instruments of generating and protecting the free exchange of ideas. So that is why they are being attacked. They have to shut up everybody, and if they control the universities,
control free thinking in this country. And that is why professors are being attacked. Not just here. Professors are attacked in different ways. Professor Nivedita Menon is attacked for expressing different points of view. The whole of JNU was attacked despite being the best university in the country. Hyderabad Central University is attacked because there the marginalized sections were speaking out against the discrimination that they were facing, and they were compelled to, institutional murder happened of Rohit and Yuna. So these are the voices that need to be suppressed because these, upper caste hegemonic voices which want to control all the resources of the country, and through a bunch of corporate families, their policies are being dictated through the government by the corporates which want just profit for themselves and complete control. So that is why we have to attack the places from where dissent is born, from where dissent is learned, where dialogue is learned as a principle of education itself. So that is why our Professor Prashanto Chakravarti was attacked, and very seriously. He has internal injuries. We don't know how he fared. I myself went and lodged an FIR along with him, and he's not in a good condition at all. Okay, thank you for joining us. So we just spoke to the president of the Delhi University Teachers Association, Nandita Narayan, and she says that even the professors feel a little insecure because of the violence that has been unleashed. She says that this is an attack on free speech and freedom of expression, and that the ABVP is scared of contradicting ideas that go against one particular narrative of nationalism. This crowd, almost 500 strong crowd, is marching from Mandi House to the Parliament. So we will follow them and try to speak to as many students as we can. Just to remind you about what triggered these protests, there was an academic seminar in Ramjas College of the Delhi University where there were a lot of speakers invited to discuss. The seminar was titled Cultures of Protest. So a lot of academicians, activists, students were invited to speak and interact with the university students, and among them was also Umar Khalid, research scholar at JNU, and Shaila Rashid, who has been the vice president of the JNU Students' Union. Before the event could start, some ABVP members surrounded the seminar hall and started throwing stones. Many students were injured in the scuffle that followed, and also allegedly some professors were beaten up. One of them, Prashanta Chakrabarti, is still in hospital. He is recovering from internal injuries. So the next day, the students again took out a march, which was sort of a show of strength to make a statement that they were not going to be afraid after the violence that took place, and they were going to fearlessly present their own ideas, debate ideas. But the students were again attacked in that protest. So just after that protest. So we are here in this march, which is not just a students' march, but a citizens' march, where apart from students, many parents, teachers, and even the common citizen of Delhi have joined the students in raising their voice and demanding action against the ABVP. We will try to speak to more people and know what exactly are their demands. I'll just show you some visuals in the meanwhile. I'm just showing you some visuals of the protest march. This has been very peaceful, but there is heavy police deployment in case
any scuffle breaks out or in case of any untoward incident, students, teachers and citizens are raising slogans against the ABVP, and also the most popular slogan seems to be Vaad Vivaad Ki Azadi, which means the freedom to debate and discuss. As you can see, there are also women workers, daily wage earners from trade unions who have also joined the students. It's very interesting that the workers have joined in solidarity with the students in their own struggle. So I'm here with one of these women. I'll talk to her and know why she is here. आपका नाम क्या है? मेरा नाम माया देवी। जोर से बोलिए। माया देवी। अच्छा। हम आए हैं मजूर बिहार फेस 1 नई बस्ती से पेंटरपुर रोड पे जुग्गिन में रहते हैं, जमुना खादर में। अच्छा, तो यहाँ पे तो ये स्टूडेंट्स का मार्च है, इसमें आप क्यों आए हैं? मुझे किसी ने बुलाया है सर यहाँ। अच्छा, इसीलिए मैं आई हूँ। अब उनका नाम नहीं जानती हूँ मैं, और हम कई लोग हैं जो यहाँ पे आए, हमारा प्रधान भी है, और हम कई लोग हैं जो आए हैं यहाँ। हाँ, तो पर क्यों, क्या हो रहा है यहाँ, ये आपको पता है? ये पता क्या है, हमें सुनने को मिला है वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। हम भी अपने जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ पे हमको रास्ता नहीं है, पानी भर जाता है रास्ते में, मच्छर बहुत है, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आप यहाँ आए हैं तो आपका जो संघर्ष है उसमें स्टूडेंट्स लोग भी जाएंगे? हाँ, हमको लगता है कि इसमें हम जुड़ जाएंगे तो हमको भी मिल सकता है, कुछ हमारा भी भला हो सकता है। अच्छा, पहले ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स लोग आपके साथ आए हैं? पहले तो सर आए, कई बार आ चुके हैं, पर देखो हुआ कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब हम आप पहली बार फिर आए हैं। अब देखो, हम सोचते हैं हमारी रास्ता खुल जाए, पक्की रास्ता हो जाए, पानी ना भरे, लाइट आ जाए, और हमें लोग कुछ रास्ते में जो रहते हैं अगल बगल में वो निकलने की दिक्कत करते हैं बहुत। अब पानी भर जाता है। I'll speak to another one of these women who have joined the students. आपका नाम क्या है? उर्मिला। जोर से बोलिए। उर्मिला। अच्छा, उर्मिला जी। आप क्या करती हैं? जी, मैं JNU में सैनिटेशन वर्कर हूँ, और यहाँ पर इसीलिए आई हूँ कि कहीं भी किसी भी स्टूडेंट या कॉलेज में किसी भी संस्था में इस तरह की गुंडागर्दी चलेगी तो हम इस लड़ाई में उनके साथ हैं, स्टूडेंट के साथ हैं। अगर कहीं वर्कर के साथ भी अगर ये गुंडागर्दी चलती है, हम उसके साथ ही रहेंगे और इस लड़ाई में हमेशा साथ रहेंगे। क्यों? पर ये तो स्टूडेंट का मार्च है, स्टूडेंट पे अटैक हुआ था, तो आपका आने का क्या? ये अटैक हमारे ऊपर भी होता है, JNU के अंदर हमारे ऊपर भी होता है, तब स्टूडेंट हमारा सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसलिए आप आए हैं। जी। So we spoke to Urmila, who is a sanitation worker in the Jawaharlal Nehru University. She says that she has joined this march because there have also been attacks against the workers, sanitation workers and other workers in the university campus, and these students who are marching here have fought for them, have stood with them, so they have joined in solidarity. So this is a very interesting case of student-worker solidarity, which we don't really see very often in Indian campuses. I'll try to speak to more common students, students from DU who have joined this march. Meanwhile, you can see the visuals of how big this march is, how many people have joined, what posters and placards they are carrying.
see a lot of familiar faces. Those who were present at the Ramjas march have also joined, and a lot of students who couldn't join that march are also here. As you can see, I'll just give you an aerial view. You can see this is a huge march. I have another student with me here who I'm going to talk to about this march. आपका नाम क्या है? मुकेश। So you are a student of JNU. Okay. So why have you joined this march? This march is about you. Since the government has came into power, we are clearly seeing, starting from the FTI, they are targeting all the institutions of the country, especially the higher education institution. So we see our fight in that sense that it's not a fight of FTI, the JNU, DU. Targeting how? Can you elaborate that? How? Targeting in the sense that like the political targeting of the students, of the teachers and the activists who are not aligned with their ideology, who are speaking against them. And the whole politics of the sun, wherever there is opposition to that government trying to, with all the police force trying to break down on the university, they want to get their autonomy and put the puppet people in like Gajendra Chauhan, Jagdish Kumar and Appara, all these kind of people, and through the political and the institutional both way, they want to destroy these institution of higher education in country. So you think that ABVP acted on the behest of the ruling party? Yeah, obviously that's all they do all the time, because there is one political and the administrative attack. There is a attack from the ground also, which is the ABVP take ahead at the government's behest. So there was also a huge march just recently in the Delhi University campus. So how is this march different? Why another march? See, that march was reclaiming the space of DU because the program has been stopped there. So that march was to reclaim the space of the Delhi University. Now, just because Delhi University is not in isolation, it's the part of the larger society. So today's march is called for the parliament, because the parliament is the elected body of our country. So we want to go there and speak to them and see what has been happening in the country. And as your representative, you should reflect on what has been happening, and you should ponder our things in the parliament and take instant action against the government. Do you think anyone from the government will come out and speak to you? I don't know, but this is what we as a citizen and as a student, this is our responsibility we'll do, and we hope that they take care of the responsibility. It's very unlikely, but let's see. Okay, thank you for joining us. So this was a student from JNU who is joined because he says that there's a design whereby most of the universities where there's a culture of dissent and protest are being attacked because they don't conform to a particular ideology in line with the ruling government. I'm also trying to look for more Delhi University students to know what exactly are the demands. I'll show you more visuals of the protest in the meanwhile. So I'm joined by another student who I'll try to speak to about this march. आपका नाम क्या है? आद्या। स्टूडेंट है? मैं हिरोनिमल कॉलेज की स्टूडेंट थी। आई वाज वन ऑफ द वंस, आई वाज इन द रूम जब उन्होंने मुजफ्फरनगर राइट बंद कराए थे। उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। Each one of us, मुजफ्फरनगर मतलब वो डॉक्यूमेंट्री? The documentary by Nakul Singh Sani, वो गुंडागर्दी, ये सब गुंडागर्दी नहीं चलेगी। They have repeatedly threatened us, and they can all take the autonomy of campus spaces, which is where knowledge grows. So you think that there's an atmosphere of terror in the university campus now? Yes, definitely. We have to think a lot of times before saying anything, before making plays. We have been attacked at performances. We have been attacked in our own colleges, where we should be able to feel secure. And I think ABVP needs to roll back and needs to understand that this attack on the universities of India needs to stop, because FTI, Hyderabad, Aligarh, all of us have been through the same thing, and it has happened to us time and time again. And I think students have now decided that they need to stop. Okay, so there was another march in the Delhi University campus.
Yes. So this march, that march was about reclaiming the university campus space, and this is to raise your voice and be heard by the elected representatives of the country. So are there any specific demands that you're going to make? See, my specific demand as a student of the university, because that is where I'm going to be applying again, is to be able to exercise this. This is what I'm holding in my hand. This So is you the are holding the preamble. Yeah, of the this is the preamble of the Constitution, and I want to be able to exercise my constitutional rights in our campus spaces and also outside our campus spaces on social networking sites like Gurmehar Kaur. I stand with her, and I want people to stand with her too. Okay, thank you for joining us. So we just spoke to Adya, who is a Delhi University student. She says that this march is especially about making their demands heard, and she wants the parliamentarians to take notice of what has been happening and make sure that there's safe and secure atmosphere in the university so that the students can debate and discuss ideas which are the most basic and most important functions of a university. I'll show you more visuals of the protest. I'm trying to find more people who we can talk to. Okay, so I'm joined by another Delhi University professor. Sir, what is your name and where do you teach? My name is Achin Vinayak. I retired from teaching in the political science department. Okay, so this is a march where mostly students have gathered and are going to present their demands to the parliamentarians. Why have you joined this march? Well, of course, because of the current situation in which there is certain assault on the question of free speech, the attempt to impose a very intolerant and exclusivist conception of nationalism, and generally to create an atmosphere of fear and self-censorship. Okay, thank you for joining us, sir. So we just spoke to Achin Vinayak, who is retired as a Delhi University professor. He says that he has come here because he sees a culture of censorship and fear in university spaces, which he is against. He has also taught for a long time in the Delhi University. I'm showing you visuals from the protest. There are a lot of placards, colors, and even a national flag. Someone is waving a national flag. I'll just ask them again. So I'm joined by another student. So what is your name? My name is Jyotiman Dev. Okay. Where do you study? I study in arts faculty. Art faculty. Yeah. Okay. So you have painted the tricolor on your face with the words Azadi. That's very interesting. And you're also carrying a national flag and have the preamble of the Constitution on your chest. So why are you, carrying these national symbols? Why have you painted a tricolor on your face? So if you read the preamble of a constitution, you would realize that the ideology propagated by the ruling party, by the ABVP and by the RSS are exactly the opposite of it. So what we want to say is that the stone pelting, the rape threats and the violence which happened on campus against us was not only an attack on us but on the campus and our main constitutional values. And that is what we are saying, that not only are we with liberty but we are also with justice, we are also with equality, we are also with fraternity, and we are with the Constitution of India. So are you trying to say that the ABVP doesn't work within the framework of the Constitution? No, it doesn't. When you stone pelt a seminar in a university, you're neither with the university and neither are you with the country which you live in. It's against democracy and it's against our republic. Okay. Thank you for joining us.
So yeah, we just spoke to a student who is carrying the national flag. He has painted the tricolor on his face and has written the word Azadi just below the national flag. And he also has a copy of the preamble, a printout of the preamble sticked on his shirt. So I spoke to him. He says that he's trying to assert that students are only operating within the constitutional framework and demanding what is a given in the constitution. And he also alleges that the ABVP doesn't function within the framework of the constitution. So yes, you're seeing visuals from the protest. We are very near to Jantar Mantar. This march started from Mandi House and is heading towards the parliament. I'm not sure if they'll be able to reach or the police will barricade the area. But I'll try to speak to more students. You can see how big the crowd is, how long the queue is. This march has been very peaceful. For those of you who are just joining us, I'm Akhil Kumar from The Wire, and today I'm covering the march, a citizens' march from Mandi House to Parliament, where students, teachers, parents and concerned citizens have joined forces and are marching from Mandi House to the Parliament against what happened at Delhi University recently, where a seminar was disrupted and students were attacked and even professors were attacked. So they say that there's a culture of fear, there's an atmosphere of fear in the university, and they want the elected representatives of this country to take notice and make sure that the students feel safe in their campus and can continue their studies without any fear and without any issues of security. I'm showing you more visuals of the protest while I'm trying to find more people we can talk to. There's this interesting banner the student is carrying which says Urdu mein hai banner taiyar ABVP khabardar, which means that this banner is in Urdu, ABVP beware. I think this is in response to a placard which was found at the ABVP protest recently, where the message on the placard was Urdu mein poster, Urdu mein naare dene walon se azadi, which means we want freedom for those who raise slogans in Urdu. I'll just speak to this student and know more. So what is your name? Faizan Ahmed. Faizan Ahmed. Okay. So you are carrying this poster. Urdu mein hai banner taiyar ABVP khabardar. ABVP Khabardar. Okay. Why are you carrying this? Just because in the last protest they left a banner कि हमको चाहिए उर्दू बोलने वालों से आज़ादी. Okay. So basically they have targeted Urdu without knowing that Urdu is just a language. You cannot connect it with religion. Okay. Urdu is not for Muslims. It is a language. Language is not for a particular religion. So we are just here to oppose that. You cannot communalize everything. You cannot communalize a language. That is Urdu. Okay. Why do you think they did that? I don't know why they did that, because they want the ideology of RSS over in the campuses. So it's very obvious that is why they did. Okay. So you're saying that they link Urdu with Muslims and Exactly. and because there's this communal atmosphere, they Yes. left it as a sort of a threat. Otherwise there is no reason. Otherwise there is no reason to oppose Urdu. What Okay. is the reason to oppose Urdu except this? Tell me if they have any.
Okay. Just because they connect Urdu with Muslims, that is why they connect it, without knowing that Urdu is also a language. Okay. Which is used more than Hindus in India, more than Muslims, because in ancient times we have seen the people who came from Pakistan to India, and they were having the language Urdu only. So they carried it in their future also. So that is why we cannot, from anywhere we cannot link Urdu with Muslims. It is a language of India, and as we respect Hindi, Marathi, Malayalam, every language, so we should give equal respect to Urdu also. You cannot attack from a particular language. This is our motto. Okay, but why are you repeating that you cannot link because they are doing Urdu it. with Muslims? Because they are doing it. Because they are doing it. We are here just to expose them. Okay. Okay. Thank you for joining us. So you heard the story about behind this banner. Apparently there was a march organized by the ABVP in the Delhi University campus where they left a placard that said, "We want freedom from those who raise slogans in Urdu." So in response to that, the student is carrying this placard that says Urdu mein hai poster taiyar, ABVP khabardar, which means here's a poster in Urdu, beware ABVP. So I'll show you more visuals of the protest. We have just crossed Jantar Mantar, and the students are marching on the Parliament Street towards the Parliament. I'll try to speak to more students. Just to remind you, this is a citizens' march where not just students but also professors, concerned citizens and even parents have joined their children and are marching to the Parliament. So I'll just try to find someone who can explain what exactly are the demands from this protest. So I'm joined by Suchita Day, who is the former JNU president. ये मार्च आज जो हुआ, ये इसमें क्या एग्जैक्टली डिमांड्स हैं और क्या अलग है पिछले वाले मार्च से जो कि डीयू में हुआ था? आज सिटीजन्स मार्च है। छात्रों के साथ साथ शहर के सिटीजन्स ने भी आज ये मार्च ज्वाइन किया है, स्टूडेंट और टीचर के साथ साथ। आज का मार्च का नाम है जस्टिस फॉर ड्यू। उस दिन 21 और 22 तारीख को पुलिस के सामने 3-4 घंटे तक एबीवीपी ने दंगाई किया, लोगों को मारा, पत्थर फेंका, लेकिन अभी तक एक भी गुंडे को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एफआईआर में उनके वेल नोन लीडर्स वहाँ पे थे, वेल नोन एक्टिविस्ट, उनका नाम नहीं लिया गया है। तो आज जस्टिस फॉर ड्यू में हम यही मांग कर रहे हैं कि अगर खुला छूट देंगे तो ये बार बार होगा। तो एफआईआर फाइल हो, जिन्होंने गुंडागर्दी किया है, जिन्होंने पत्थर फेंका है, मारपीट किया, उनको गिरफ्तार किया। अच्छा, तो पहले जो आपने स्टूडेंट से कंप्लेन किया था उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है? क्राइम ब्रांच को उन्होंने कहा उन्होंने ट्रांसफर किया है, एक एफआईआर का वो है, लेकिन एफआईआर में जिन्होंने मारपीट किया, जिनका नाम सबको पता है, उनका नाम नहीं। और ये इतने दिनों बाद का बात मैं कह रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, जहाँ पे ये गुंडागर्दी हुआ तो सीसीटीवी फुटेजेस होंगे अब, और सिर्फ मैंने सोशल मीडिया में क्लियर है कि एक तरफ मारपीट था। सीसीटीवी फुटेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर अभी तक उन गुंडों को क्यों नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं फाइल किया? तो ये आज के ठीक है, थैंक यू। So that was Suchita Day, who is a former president of the Jawaharlal Nehru University Students Union. So she says that the main demand of this march is to ensure that action is taken against those who were involved in violence in the Ramjas protest and the other march on the subsequent day that took place in the Delhi University campus. She alleges that the case has been transferred to the crime branch, but the police is not showing no willingness to act further, even in the face of a lot of evidence circulating on social media. She says that the names of those who perpetrated the violence are, very. Everybody knows who started this violence, she alleges, and says that evidence is all over social media. Even then, why action isn't being taken? So we have just reached YWCA, which is very close to the Parliament. The police, I'll just show you some visuals. The police has barricaded the area and students can't go any further. There's there are 2 water cannon vans here.
police deployment, as you can see. So the protesters have stopped here. As you can see, the road is heavily barricaded. There's 2 layers of barricading, and the students, I don't think students will be able to continue their march further towards the parliament. There are 2 water cannon vehicles, if you can see. I'll just zoom in. There are 2 water cannon vans here. You can see a banner here which says DUTA. DUTA is Delhi University Teachers Association. A lot of professors, teachers from Delhi University have joined their students in this march. I'll just show you some visuals of the protest while I find more people to speak to. आपका नाम क्या है? अच्छा, तो आप क्या दिल्ली में इस मार्च में क्यों हैं? मैं महिला संगठन से हूँ और आगे जो पीढ़ी आने वाली है ये इस समस्या से न जूझे, क्योंकि ये जो जातिवाद है ये सब लेकर के जनरल में ABVP चल रही है, वो हर गली में हर नुक्कड़ पे यही चर्चा हो रहा है कि ये जो RSS के संगठन वाले BJP के जो भी छात्र संगठन है वो बहुत ही ये कर रहे हैं, कोई अपना उसको लेक्चर देने की बुला रहे हैं, जो उस पर कमेंट करना, ये करना, अंडे टमाटर जब फेंकना ही गलत है। वो किसी को भी बुलाओ, उसको बात रखने की आज़ादी है, वो बात रख के उसके बाद में उस पर कुछ आप निर्णय दे सकते हो। अगर बात उसका गलत है तो आप कुछ बोलो, नहीं तो नहीं। मैं अपने बच्चों के साथ आई हूँ। अच्छा, आपके बच्चे DU में पढ़ते हैं? नहीं, अभी छोटे छोटे हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चों के साथ। As you can see, she has come with her children. तो आप लोगों को पता है यहाँ क्या हो रहा है? ये जो रामजस कॉलेज में जो बवाल हुआ था उसके विरोध में हम सब यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे वो सब नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या नहीं कॉलेज के होना? बच्चों के साथ क्या हुआ था? कॉलेज कहते हैं कुछ BJP वाले लोगों ने आकर कॉलेज के अच्छा, ठीक है, thank you. So as you can see, I just spoke to a leader of a women's rights organization who has also come with her kids, and she says that she is really concerned about the future of her children, who she says can decide to study in the Delhi University, and she wants to make sure that there's an atmosphere free of fear and where ideas can be debated. So this march has stopped right in front of YWCA, Young Women's Christian Association, and because there's heavy police barricading, there's also water cannon tanks. So the march has stopped here, and I think there'll be speeches made from here. I'll try to speak to more students and also try to show you some of the speeches. Excuse me? I'm from The Wire. Can I speak to you for a minute? Yeah. I'm from The Wire. Can I speak to you for a minute? Yeah, so... Can I just paint his face? yeah, so you're painting the... painting. Yeah, why are you painting the national flag on the faces? Oh, I'm going to paint the national flag, and if you want something else, then that too. But I can tell you why I have the national flag and Azadi on my face. Yeah, why? That's because that is our constitution. I also have the preamble on my body. Yeah. So as you can see, she has the copy of the preamble pasted on her dress. Yeah. So why this symbolism? Why are you doing this exactly? I think the BJP, RSS and our government somehow is sort of trying to monopolize the
this national symbol, and they're trying to like bluff people by saying that it is one kind of nationalism, which is Hindu nationalism and Hindutva as they call it. What I am trying to say is that this is not what my country stands for. My country stands for all this, and this is the only nationality. When we are in class 4 or 5, we are taught this preamble, and this is secularity and liberty, democracy, azadi. They are not bad words, they are what our constitution has taught us. तो इसमें कुछ ऐसे शर्म की बात नहीं है, और उनको हमारे symbols monopolize करने भी नहीं दे रहा है. And you are a student of DU? Yes, I'm a student. Okay. Thank you for talking to us. So, as you can see, unlike many protests that I've been to, a lot of students are carrying the national flag, painting the national flag along with the word Azadi, and they're trying to assert that there's no one fixed definition and narrative of nationalism. And they allege that the RSS-backed student organization is trying to impose a certain definition of nationalism on them, and whoever goes against this is being met with violence. So Nandita Narayan from the Delhi University Teachers Association is making a speech here. So I'll just try to show you some visuals of it. उनमें से कोई साथी सामने आए. सबसे पहले कुणाल, So a student from Ramjas College, where this all started, is going to speak now. So I'll try to cover the whole. शांति बनाए रखे, और मीडिया से मुझे गुजारिश है, मीडिया के साथी आप लोग बहुत कुछ कवरेज तो ले. So the students are also joined by Najib. When missing from the Jawaharlal University, and her son has not been found yet. So she's sitting here along with Kanhaiya Kumar, who is the former JNUSU president. So she is carrying placard that says Najib. Najib is her son, who went missing from the JNU campus after at least some members of ABVP attacked him. अगर हम इस तरह से अपनी आवाज नहीं उठाते रहे, लोगों के बीच में नहीं गए, उनको नहीं समझाया कि आजादी ही हमारे पास है, इस मान से जो स्वतंत्रता का एक जो हमको मिला है और जो हमने पूरी तरह से मिला है, उसके लिए अगर हम आवाज उठाते हैं तो वो कैसे एंटी नेशनल जाता है. अब यहाँ पे कुणाल रामजस कॉलेज से अपनी बात रखते हैं. Student from the Ramjas College is going to speak. मेरा नाम कुणाल है, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मैं एक तो बात कहना चाहता हूँ यहाँ इस मंच पे ABVP के उन छात्रों को, क्योंकि वो छात्र नहीं थे, मैं गलत पढ़ी, वो गुंडों थे. ABVP के उन गुंडों को मैं यहाँ से बात कहना चाहता हूँ कि एक तो पहली बात ये है कि वो जो चाहते थे कि हमको डराना, वो चाहते थे कि हम कैंपस में जाके सेमिनार ना करें, वो चाहते थे कि हम कैंपस में जाके ये ना पूछें कि रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर क्यों करवाया जाता है, वो चाहते थे कि हम ये ना पूछें कि JNU में विचेंट क्यों होता है, वो चाहते थे कि हम ये ना पूछें कि नाजीब को कौन गायब करवाता है. तो वो जो डर फैलाना चाहते थे उसमें वो कुछ हद तक सीमित हुए हैं, कुछ हद तक उन्होंने डर फैलाया है. बट मैं अगर बात कहना चाहता हूँ, उस डर से हम रुकेंगे नहीं, और भी सेमिनार रामजस में होंगे, और भी बातें होंगी, हम बार-बार पूछेंगे कि रोहित वेमुला को क्यों मारा जाता है, हम बार-बार पूछेंगे कि नाजीब को कौन गायब करवाता है, और हम सबको बुलाएंगे, हम कश्मीर पे भी बात करेंगे, हम मस्तक की बात करेंगे. चाहे तुम पत्थर फेंक लो, चाहे तुम पुलिस का सहारा ले लो, चाहे तुम गोली मार दो, हम बात जरूर करेंगे. तो लाठी पत्थर खून नहीं, तो लाठी पत्थर खून नहीं. और एक और बात, छोटी सी बात है जो मैंने मोरिस नगर पुलिस स्टेशन के बाहर कही थी 22 तारीख को, जब हम पे पथराव हो रहा था, जब हम पे अंडे लेके जा रहे थे, उस बात को मैं फिर से दोहराना चाहूंगा. और आज जब मैं इस बात को कह रहा हूँ तो मेरे को कहते हुए ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ज्यादा कन्विक्शन है और बहुत फर्म बिलीव है, क्योंकि उस दिन जब मैं कह रहा था मैं बहुत डरा हुआ था. बट उसके बाद जब 23 को ITO में इतना बड़ा सॉलिडारिटी हमको मिलता है,
जब 28 को डीयू के स्टूडेंट रेजिस्ट करते हैं एबीवीपी की गुंडागर्दी को और 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट आते हैं और कहते हैं हम एबीवीपी को रिजेक्ट करते हैं, और जब यहाँ पे भी हमको सॉलिडारिटी मिलती है, तो एक छोटी सी बात और आखिरी बात जो मैंने वहाँ कही थी मैं यहाँ पे भी कहना चाहता हूँ कि आरएसएस 1925 में बना था और एबीवीपी 1949 में बना था, पर रामजस कॉलेज 1917 में बना था। जब रामजस कॉलेज नहीं था बट तुम नहीं थे, और जो यहाँ पे लोग हैं और जो हम सब हैं, हम ये फिर से उस टाइम को लाएंगे जब रामजस कॉलेज होगा और तुम नहीं होगे। धन्यवाद। सबसे पहले हम सब अपनी सॉलिडारिटी, हमारी जो शिक्षक और छात्र जिनका पूरी तरह से पिटाई करने के बाद जो हाल खराब किया गया, और खासतौर से हमारे प्रोफेसर प्रशांत इंटरनल इंजरीज आई हैं और जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करने की कोशिश की, कंप्लेन की है जब वो हॉस्पिटल से निकल के आए, और अभी तक वो एफआईआर जहाँ तक मेरी जानकारी लॉन्च नहीं हुआ। ये बहुत शर्म की बात है कि जहाँ पे किस तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर का एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, इससे कम का एफआईआर नहीं लॉन्च हो सकता, क्योंकि ये अटेम्प्ट टू मर्डर था। हेवी फूट से उनको किक किया गया और ये अंदर अगर इंटरनल इंजरीज की वजह से कुछ हो जाता है तो और पत्थर फेंक के लोगों के सर पे, शैला राशिद के सर पे भी पत्थर फेंका गया। जिस तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है वो खुलेआम घूम रहे हैं, वही शक्ति हमें हर जगह यूनिवर्सिटी में दिखाई दे रही है। चौड़े होकर चल रहे हैं कि पुलिस तो हमारे साथ है, और पुलिस ने उनके साथ मिलकर स्टूडेंट्स की पिटाई की। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि मेरे कॉलेज सेंट स्टीवेंस कॉलेज, जहाँ से आमतौर से कम छात्र निकलते हैं सड़कों पे, पॉलिटिकल कोई एफिलिएशन नहीं है उनका, वहाँ से 60 बच्चे पुलिस स्टेशन के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी पूरी as I just showed you, Najib's mother has also joined this protest. Najib is a student of Jawaharlal Nehru University who went missing after allegedly some members of the ABVP attacked him in the university campus. So she's also here, as is Kanhaiya Kumar, the ex-president of JNUSU, Shaila Rashid. Yogendra Yadav from the Swaraj party has also joined the students. I can also see D. Raja here. I'll try to speak to more people here. Also, Nandita Narayan, the Delhi University Teachers Association president, just said that they demand that a case of attempt to murder be filed against those who attacked Professor Prasanta Chakrabarti, who is still in the hospital, is recovering from internal injuries because according to medical reports, he was kicked with heavy boots. So she says that nothing less than attempt to murder is acceptable and police should take swift action in that case. So Umar Khalid is also here. He has just taken the stage and is addressing students. I'll try to show you some parts of his speech. और देखिए क्या बाहर आई है साथियों, रामजस कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय के तमाम छात्र जिन्होंने उन गुंडों को उनके गढ़, जो अपना गढ़ बोलते हैं, वहां मुंहतोड़ जवाब दिया है। मैं आप सब लोगों को जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। मैं जय भीम और लाल सलाम फातिमा नफीस, जो पिछले 4 महीने से हमारे साथी नजीब की लड़ाई में शामिल हैं, हमारे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ी हैं, मैं उनको भी जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। मैं जय भीम लाल सलाम राधिका वेमुला, वही संघी गुंडे जिन्होंने आपको आके पीटा, वही लोग उनको पिछले 1.5 साल से परेशान कर रहे हैं, मैं राधिका वेमुला को भी जय भीम लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। साथियों, बहुत बात बोलने की नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिन से देखें, जब से रामजस से मारपीट करी गई, इसको हर किस्म से ट्विस्ट दिया जा रहा है। ये बोला जा रहा है कि 2 लोगों में क्लैश था, 2 संगठनों में क्लैश था। As you can see, this march is not just about what happened at the Ramjas College, but there are also demands to take action against those who are disrupting free speech in campuses. Umar Khalid, who is a research scholar in the Jawaharlal Nehru University,
just said that he stands in solidarity with Radhika Vemula, who is the mother of Rohit Vemula, a Dalit student who committed suicide in Hyderabad University. So I'll try to speak to more students who have joined this protest. इक्वालिटी की बात करते हैं, जो लोग जातिवादी हैं उनको उसमें भड़क जाते हैं और आपको भड़कना चाहिए, क्योंकि अब गुलामी के दिन खत्म। अगर आपको लगता था आप आके मार के पीट के हमको डरा सकते हैं, तो हजारों छात्रों ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज इस यानी दिल्ली की तरह फंबा नोचते हैं, आप टीवी स्टूडियो पर जाके पहुंचे हैं। और अगर आप पिछले कई दिनों से टीवी स्टूडियो पर जाके देखें, किस किस्म से पूरी चीज को पलटाने की कोशिश करी जा रही है। एक स्क्रिप्ट जो बुरी तरीके से ये लोग पिछले साल जेएनयू में हार गए, उसी स्क्रिप्ट को फिर से लेकर आए हैं। बोल रहे हैं कि देशद्रोह बनाम देशभक्ति। अरे भाई, तुम इस देश के नहीं हो। इस देश में जितना लूट फसाद है उसकी जड़ तुम हो। देश से हम नहीं जाएंगे, देश से तुम जाओगे। So I can see a lot of activists, human rights defenders and professors who have joined this protest. So the march has stopped here and student leaders and even professors are making speeches addressing the crowd. They say that they are trying to make those who are sitting inside the parliament hear their demands and ensure that action is taken swiftly. पिछले साल बता रहे थे कि मैं पाकिस्तान गया था, वो तो पिछले साल बता रहे थे मैं जैसे मोहम्मद से लिख गए, तो पिछले साल बता रहे थे झूठ बोलना आप लोग बंद करें। झूठ के आधार पे फासिस्ट राजनीति आज हमारे देश में हो रही है, और उस फासिस्ट ताकतों के स्पोक्स पर्सन बन के जो कुछ संगठन, कुछ मीडिया चैनल यहाँ काम कर रहे हैं, हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं, देश की जनता को मत समझिए। वेंकैया नायडू साहब बोल रहे हैं कि आजादी के नारे को भी हम देशद्रोह के डेफिनेशन में लेकर आएंगे। बहुत लाजमी है। जो गुलाम लोग हैं, जो अंग्रेजों की गुलामी किए थे, आज कंपनियों की गुलामी कर रहे हैं, अडानी अंबानी की गुलामी कर रहे हैं, उनको आजादी के नारे से बहुत प्रॉब्लम है। याद कीजिएगा, ये वो लोग हैं। Okay, I'm getting a lot of comments requesting that I speak to more people. So I'll just try to speak to more people. अगर भारतीय जनता पार्टी वेंकैया नायडू को इतना सीरियसली लेती है। Okay, I'm just joined by Kavita Krishnan, who is secretary of the All India Progressive Women's Association. So why have you joined this march? This is a march mostly for the rights of the students. So why? Yes, I think it's a citizens' march where, as citizens, each of us needs to say that the freedom of our teachers and our students to hold seminars, for film screenings, or teach in classrooms without the ABVP goons acting as censors, as hooligan censors, is something that should concern us all as citizens of this country, and that's why I've joined this march. It's also an issue of women's freedom, because I've seen how the ABVP justifies its attacks on campuses by trying to profile women of those campuses as being dangerously too free. That has happened in JNU last year. It's happening in Delhi University this year, where I saw on social media last night also posters and placards held up by Delhi University women students being mercilessly subjected to all kinds of sexist, misogynist, violent abuse because they're trying to say that it's dangerous for women to seek to speak freely on campuses. The kind of violence Gurmehar Kaur is facing is one of the examples of that. That's another reason why. Also, there was a recent controversy regarding Gurmehar Kaur, who I've heard from media reports has left Delhi now. So why do you think she was specifically attacked? I think that they found it dangerous. Because many women, not just her, many women are posting such messages on social media. But you see, she posted it. They found it dangerous. That they think of soldiers and especially soldiers who have been killed in war as being captive fodder for their propaganda, to silence us all. To say, what about the soldier? To find a daughter of somebody who was a soldier and lost his life in a war
to be speaking for peace and to be speaking for reason and speaking against the ABVP was intolerable to them. That is why they singled out her out for attack. And I want to say here that the people who are trying to turn the debate onto Gurmehar's views on war, who are trying to turn the debate to some poster in JNU and to extraneous issues to the ABVP's hooliganism. They are saying, abhivyakti ki azadi ki kya seemaएं hongi? What will be the limits of freedom? I've been asked that by several media channels. I want to say here that, when a woman is attacked, then it's a favorite tactic of some people to change the topic to the limits of what the limits of her clothing and her behavior and her mobility should be. And similarly now, when the ABVP has attacked students and teachers, there is an attempt now to switch the debate to the arena of what are the limits of free speech, and try to say Gurmehar has flouted those limits, some poster in JNU has flouted those limits, students here are flouting those limits, teachers are flouting those limits in classrooms and whatnot. And I want to say, we need to say that the only limits we should be talking about now are the limits the goons should remain within. Let ABVP remain within the limits of the RSS Shaka. They can wield their lathis inside the Shaka. They can't get out of the limits of the Shaka and wield those lathis and wield those kicks and rocks on the streets and on the campuses and the classrooms. They can't do that. They can't do that. Okay, it's one last question. I've seen a very interesting poster here that reads Bharat ki Mata nahi banenge. So what do you think that means, and why are students, why the students I think that's a wonderful, beautiful slogan, which is an answer to the manner in which the hooligans are at the one time shouting rape threats and at the other time saying Bharat Mata ki Jai to silence all forms of dissent. And I think women are trying to say, don't use us as fodder for your jingoism and your fake patriotism, because we will. Telling somebody that you have to be Bharat Mata means, there's an old feminist slogan that a pedestal like a prison is a very small place. So to be told that you are a Bharat Mata is to fix you in a very small, very thin, very unidimensional place where you are not allowed to then access your own freedom, because you're supposed to behave in a certain way into which you're painted into place as Bharat Mata. And which is very much, a certain kind of image drawn from Hindu mythology, from upper caste imagery, all of that, So I think that there are various ways in which people answer that. And the way, one of the ways is the Delhi University students who are trying to say Bharat ki Mata nahi banenge. And I think, hats off to them, because they are doing this so beautifully. They are saying we refuse to be part of your campaign. As women, we are demanding, we want to be autonomous, independent women in our own right. And we are talking about our freedoms and rights, and we will not be painted onto your posters and as your photo. Okay, thank you for joining us. So that was Kavita Krishnan, who is a women's rights activist and is the secretary of the All India Progressive Women's Association. So here I can see a lot of activity going on. Students are drawing graffiti on the road. This one says El Pueblo Unido Jamás será vencido, which is a popular Spanish slogan, which means the people united will never be defeated. So there's as you can see, the road is filled with different kinds of slogans here. And the students and the march has stopped. There are many popular leaders standing on the makeshift stage and addressing the crowd. Professor Purvanand. For those of you who are just joining us, this is Akhil Kumar from The Wire, and today I am right now in front of the Parliament, where around 500 students have marched from students, not just students, even teachers, professors, parents, and even workers who work in universities, who have come here to protest against the violence that was unleashed on the campus, where a lot of students and professors were attacked, and they are demanding swift action. As you can see, Sitaram Yechury is on stage and he's addressing the crowd. Sitaram Yechury is from the CPIM. मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी तय करना चाहते हो वो अधिकार आपका है, स्वयं आपका है। उसके ऊपर कोई अपना ख्याल थोपने की कोशिश करे तो वो हमें मंजूर नहीं, वो हमें स्वीकार नहीं।
जहाँ तक देशभक्ति की भावनाओं की बात आ रही है, कहते हैं कि आप देशद्रोही हो और वो देशभक्त है। अरे देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है? वो सीधा सीधा हमारे संविधान के बुनियाद में रचा हुआ। कौन है इंडियन नेशनलिस्ट, कौन है एंटी नेशनल? उसके लिए हमारे देश के अंदर कानून है और कानून को लागू करने वाले संस्थाएं, उसको आप खुद अपने हाथ में ले लो, ये कहते हुए कि हम तय करेंगे कौन एंटी नेशनल है, कौन नेशनल है। ये काम जो आप कर रहे हैं वो अपने आप में एंटी नेशनल है, अपने आप में एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अपने आप में गैर कानूनी है। ये नहीं हो सकता है, ये सीधा सीधा साफ उनसे कहने की जरूरत है। क्योंकि आज सवाल क्या खड़ा है? सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके के ख्याल कौन बोलेगा, कौन आकर किस तरीके की बातें कहेगा। और यूनिवर्सिटी के अंदर कई सारे बातें कई सारे लोग आके कहेंगे और कहना भी चाहिए। तभी तो छात्र होने का मतलब यह है कि ये सभी ख्याल जब आपके सामने आएंगे, उसके आधार पर आप अपने आजादी से आप तय करोगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और उस आधार पर आप अपना जिंदगी बनाओगे आगे को। ये पूरा देश आपका है, 2/3 देश की आबादी आज नौजवान है, और ये देश कैसा रहेगा वो आपको तय करना होगा, हमें नहीं। हम तो सीनियर सिटीजन हो गए। अब आप लोगों को तय करना होगा कि किस तरीके की भारत चाहिए आपको। ऐसा भारत जहाँ पर जितने भी, जैसे पहले भी कहा था, लेट 100 flowers bloom, let 1,000 thoughts contain, एंड उसके बीच में से जो भी निकलेगा राय वो आप लोग तय करेंगे। और कोई भी उसके ऊपर थोपना चाहता अपना राय, वो मंजूर नहीं है हमें। एंड दैट इज द क्लियर पॉइंट दैट वी हैव टू कन्वे टू द होल कंट्री एंड टू द पीपल। लेट एवरीबॉडी टेक अप द प्रेजेंट, व्हाट इज दिस एंटायर क्वेश्चन ऑफ नेशनलिस्ट। एंड ये अब 1 साल हो गया, कन्हैया कुमार के ऊपर आप सेडिशन चार्ज लगाए, कोर्ट में ले आए थे, यही कही थी उस जमाने में, और उसके बाद आप कहीं और ले गए और उस कोर्ट में सेडिशन चार्ज लगाया। आज तक आपने साबित नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज आप लगा रहे थे कि वो एंटी नेशनल है, उनकी पिटाई कर दी, वो सब अब कानूनी तौर पर वो खड़े नहीं हो रहे, वो वैलिडेट नहीं हो पा रहे। तो इसलिए हमारा यही कहना है कि ABVP वालों से, हमने ये पहले भी देखा क्या है उनकी देशभक्ति, किस तरीके की देशभक्ति है वो, और ये कहेंगे कि सिर्फ एक धर्म के लोग जो है देशभक्त है, बाकी लोग नहीं है। तो उनको याद दिलाना है, कई बार याद दिला चुके हैं, आज भी याद दिलाना है उनको कि 1965 में जो अपना एक युद्ध हुआ था, पाकिस्तान के साथ जंग हुई थी, उस पाकिस्तान के जंग में सबसे पहला परमवीर चक्र किसको मिला था? अब्दुल हमीद, एक मुसलमान को देश के राष्ट्रपति उनके वो स्वर्गीय उनकी पत्नी को ये परमवीर चक्र से सबसे सर्वोत्तम जो हमारा मेडल होता है, वो मेडल उनके वाइफ को, मार्टर्ड वाइफ को, उस समय के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे सौंपते हैं हमारे राष्ट्रपति ने अपने रिपब्लिक डे परेड। अब्दुल हमीद एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने क्या कहा? मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है हम, क्या था हमारी पूरी बुनियाद, हमारे संविधान की पूरी बुनियाद है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश के 4 सिपाही। और ये है सिपाही हमारे देश के, सिर्फ सरहद पे जो लड़ने वाले सिपाही है उनको हमारी सलामी, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है आप सब भी सिपाही हो जो एक बेहतर भारत बनाना चाहते हैं, और ये सिपाही है जो एक बेहतर भारत बनाएंगे। इसलिए क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं किसके साथ मेरी दोस्ती होगी, क्या मैं किस तरीके के कपड़े में पहनूंगा, ये सब निर्णय हम करेंगे खुद। इस निर्णय को छीनने की आजादी किसी की नहीं है, ना अधिकार। इसलिए आज मॉरल पुलिसिंग के पेट्रोलिंग चल रही है। आज काउ विजिलेंटिज्म के नाम पर वो कह रहे हैं कि ये जो है गाय की हत्या कर रहे हैं, उस वजह से दलितों की हत्या हो जाती है, मुसलमानों की हत्या कर देते हैं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, अब वही ABVP और BJP तय करेगी। ये मंजूर नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत नहीं है। और ये आवाज आपकी उठनी चाहिए। हमारी अधिकार, हमारी स्वतंत्र है, और छात्र होने के नाते हमने भी वही किया था 40 साल पहले। हम आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने अधिकार को मत खोइएगा। उस अधिकार के आधार पर ही
एक नया भारत, एक बेहतर भारत बनेगा और उस भारत को बनाने में आप लोग So you just saw Sitaram Yechuri from the CPIM who's addressing the crowd here. He alleges that the ABVP, RSS and BJP are trying to communalize, spread an atmosphere of communal hatred, and he's reminding that the first military gallantry award was awarded by the president to a Muslim man. So he's just trying to spread the message of communal harmony, and is also speaking for the rights of the students, saying that they are also, it's not just the soldiers at the border who are doing service to the country, but also the students. He says that they are also soldiers who are fighting for the country, who are doing a service to the nation. So I'll try to speak to more students. You can see there are various placards that the students are carrying. There cannot be a better India without that right. So that you will do all that. This is my sincere hope and wish you all the best in the future and these times. And we'll always there with you in giving our vote to the country. As I'm joined by another woman who is carrying a placard that says "Mar Peet Danga Fazad ABVP, क्या गई है तेरा राष्ट्रवाद." अच्छा, तो ये प्लाकार्ड आपने क्यों बनाया, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि आए दिन हमने देखा है कि डीयू में कैंपस में आए दिन गुंडागर्दी होती रहती है, और यहाँ पर औरतों के साथ और जो स्टूडेंट्स पढ़ती हैं लड़कियाँ, उनके साथ बहुत सारे ये काफ़ी ABVP वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनके साथ रेप के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, और हमें अपनी कुछ भी बात को रखने के लिए हमें आज़ादी चाहिए। बस हम इसी मांग को लेकर। तो आज़ादी का मतलब आपका यही है कि अपने विचार को रखने की, अपने विचार को करने की। अच्छा, मुझे ये बात से आज़ादी आपके DU में पढ़ते हैं? हाँ जी। अच्छा, स्टूडेंट होने के नाते हम पढ़ने के लिए, क्योंकि वो ABVP के जो गुंडे हैं वो पढ़ने ही नहीं देते बिल्कुल भी बच्चों को। अगर 2-4 भी बच्चे बैठते हैं तो उनको बैठने ही नहीं देते हैं। अपनी गुंडागर्दी दिखाने के नाम पे वो उनको उठाते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना है, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है। गा नहीं सकते इकट्ठे होके, ना पढ़ सकते हो तुम लोग, ना कुछ बोल सकते हो, डिबेट नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? हम स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, ना कि गुंडागर्दी करने जाते हैं। तो अच्छा, पर क्या आपको नहीं लगता कि ABVP में सिर्फ गुंडे नहीं है, वहाँ बहुत सारे कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं? स्टूडेंट हैं, ये मानते हैं हम, लेकिन तो क्या उन्होंने इसके खिलाफ कुछ बोला है? ये जो हुआ, आप कह रहे हैं कि ABVP ने गुंडागर्दी की? हमने सामने देखा था कि कुछ दो व्यक्ति आते हैं ABVP के, उन्होंने बच्चों को, क्योंकि वो गा रहे थे आराम से, बैठे हुए थे कुछ 4 बच्चे, वो गा रहे थे आराम से, पढ़ रहे थे फैजल की जो गजलें होती हैं, या फिर हाँ, और भी बहुत कुछ बोल रहे थे और पढ़ रहे थे। तो उनको गाने, वो उनकी आज़ादी में भंग कर रहे थे, कि बोलते हैं कि ये हमें पढ़ने नहीं दे रहे, पुलिस को बुलाकर लाते हैं और बोलते हैं कि हमें पढ़ने नहीं दे रहे, तो इन्हें हटाइए यहाँ से। तो पुलिस उनकी बात मानती है, ना कि उन सारे बच्चों की, और उन्हें भगा दिया जाता है वहाँ से, बैठने नहीं दिया जाता। आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हैं? हाँ। ठीक है, थैंक यू। We just spoke to a couple of students who say that the ABVP is creating a lot of trouble in the campus, and they are having difficulty in organizing seminars and discussing ideas and even studying. We saw it in Sri Lanka, we saw it in Burma, we saw it in several countries across the globe. As you can see, the character of fascism. D. Raja from the CPI, Communist Party of India, is addressing the crowd right now. Fascism is in action in India, and it is a fight. It is a fight between ABVP versus the rest of the country, the rest of the student community. It is ABVP versus the Republic. It is ABVP versus the Constitution of India, which has been given to us by Dr. Ambedkar and galaxy of leaders. And that is where the struggle assumes greater importance. We will have to protect our Republic. We will have to protect our Constitution. And we will have to carry forward this struggle. As I stand before you, I tell you, I am son of landless agricultural workers. I represent millions of faceless, nameless Indians in this country who toil every day to build this nation. And I don't need
anybody to give me certificate whether I am a nationalist or a patriot. My nationalism, my patriotism can never be challenged. In the same way, the faceless, nameless Indians, millions of Indians who built this nation, they don't require any certificate on nationalism or patriotism. We don't require any Bhagavad or Venkaya Naidu to teach us what is nationalism, what is patriotism. So let them understand, India doesn't belong to them. India belongs to all of us. India belongs to all of us. We are the citizens. That is why we proudly claim we hold Citizens March in support of students. I as a citizen, I question this government. I criticize this government. I challenge this government. What you want to do in this country? Today you are in power. Tomorrow you may not be in power, but the country will survive. The nation will survive. Democracy will have to survive. That is where, my friends, my comrades, we will have to carry this struggle. It is going to be a long-drawn battle. Let us not decide as though it is over. It is going to be a long-drawn battle. This battle has to be conducted. One of the senior ministers in the government, he told me one day, we have won the ideological battle. Then I asked him, is it ideological battle? What do you mean by ideological battle? What do you mean by battle of ideas? When ideas are to confront each other, why do you bring sedition charges? Why do you bring Delhi police? Why do you bring all your administrative authorities? Is it battle of ideas? Is it ideological battle? What are you talking? You fascists never believed in democracy, never believed in ideas, ideological. This is D. Raja from CPI, Communist Party of India, who is addressing the crowd. In the name of our country, it is our country. In the name of our country, our India, we will have to fight against these fascist forces, dictatorial forces, and that will ensure our rights, our freedoms, our constitutional rights, and let us not expect any constitutional morality from BJP or from the present government. They have no respect for constitutional morality, which has been emphasized by Dr. Ambedkar, even in the Constituent Assembly. Later on, when he was part of the government, this constitutional morality we cannot expect from BJP and ABVP. So, friends and comrades, it is a battle. We will have to carry on this battle, and our party will be with you, and it is with you. And when Parliament meets, as Comrade Sitaram Yechuri said, we will all try to raise this issue and ask the government, what do you want to do with the student community? Because you are not just children. You are not just children. You have the voting right. You have the power to elect who should rule the बहुत अच्छा कर दिया अजय कुमार मेरा नाम बहुत शानदार है शुक्रिया आप लोगों का जबरदस्त As you just heard, D. Raja from CPI, Communist Party of India, just said that he, along with other ministers like Sitaram Yechuri, will raise this issue in the parliament and demand answers from the ruling government on what action they are going to take regarding this issue. I'm just showing you some visuals. There are a lot of speakers lined up. Continue to fight against these fascist forces for the sake of our country and its future. Thank you very much. Would like to announce, please. Exactly. Yes, he will raise that also. He will raise that also. Already we raised this issue of Najib. We will continue to raise this issue of Najib. And there are many issues, specific issues. We will take up all specific issues. Why? No, it was raised. No, it was raised. It was raised. Notices were given, but Parliament was not allowed to function. That's a different issue. But there were notices. We raised that issue. Don't think we have not raised that issue. And Parliament members have their responsibility. People from the crowd just confronted D. Raja saying, why haven't you raised the issue of the disappearance of Najib in the parliament? And he's trying to reassure the protesters.
We will raise all these issues. Thank you, Comrade Raja. Friends, we have Professor Apurvanand here, and I'd also like to announce that Yamini and friends from different colleges of Delhi University are also here with the song. They're ready with the song. But first, we'll just request Professor Apurvanand. Now, we don't have a lot of time, so I'll request all the speakers to please say whatever they would like to place before us in very short period of time, very briefly, because we have a lot of names here on our list. Professor Apurvanand, Department of Hindi, Delhi University. बहुत शुक्रिया। When you were told that the invite has been retracted, like the minute you got the call, what was your immediate reaction? Like, did you see it coming, or what? See, nothing seems to surprise anymore because I mean, as an enemy as unscrupulous as the RSS, with an adversary like that, they can go to any extent. Just like in last year, I could not have expected that they would say that I've been to Pakistan, someone who does not even have a passport. But they can spread all kind of lies. They can do anything. They can shoot to any level. जिसके बारे में देश के मंत्री पूछते हैं कि उसके दिमाग में दहर किसने खोल दिया। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि भगत सिंह की उम्र क्या थी? So Professor Apurvanand from Delhi University is addressing the crowd now. पंडिता रमाबाई की उम्र क्या थी जब उन्हें पंडिता की उपाधि मिली? क्या उम्र थी रत्माबाई की जब उसने अपनी शादी को अदालत में चुनौती दी? और इस बात को आज से 125 साल से भी ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए नौजवान दिमागों को कम करके मत आंकिए। नौजवान दिमाग अपने लिए सोच सकते हैं और अपने लिए फैसला कर सकते हैं। नौजवान दिमागों को किसी की तरफ से अभिभावकत्व की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय या पूरी शिक्षा व्यवस्था दरअसल इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि जो बच्ची है, जो नौजवान है, Come across Umar Khalid here. Just to remind you, in the Ramjas event, from where this protest started, Umar Khalid was supposed to be one of the speakers. He was going to present a paper on Adivasi struggles in Chhattisgarh, but he didn't join. Allegedly, his invite was revoked because the ABVP were raising slogans against Umar Khalid. So earlier when I spoke to him, he says that he didn't go, he decided not to go because he says it would have aggravated the situation more and common students could have been hurt. So we'll just try to speak to him now. दूसरी चीज जिसे पढ़ना और पढ़ाना कहते हैं, इसको लेकर एक गलतफहमी फैलाई जा रही है। You can see that a lot of students and citizens, teachers, parents, all of them are still here listening to the speakers. Professor Apurvanand from the DU is addressing the crowd right now. I think next up is Yogendra Yadav from the Swaraj Party. बायोलॉजी डिपार्टमेंट के भीतर है, उससे ज्यादा कहीं आर्ट्स फैकल्टी की चाय की दुकान के पास है, जहां हम और आप सब एक दूसरे से मिलते हैं और बातचीत करते हैं। वो सेमिनार्स में जो आयोजित किए जाते हैं और उनमें अलग अलग विभागों के लोग जाते हैं और अलग अलग विद्वानों को सुनते हैं। इसलिए यह गलतफहमी फैलाना भी बंद करना चाहिए कि पढ़ाना लिखाना सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के भीतर होता है। ज्यादातर पढ़ाना लिखाना, और मैं अपने छात्रों के अनुभवों से जानता हूँ और खुद अपने तजुर्बे से जानता हूँ, वो सिलेबस के बाहर होता है। इसलिए अगर हम सिलेबस के बाहर कुछ कर रहे हैं तो उसे आप नहीं कह सकते कि वह शिक्षा के बाहर, वो शिक्षा के भीतर। यह जुलूस ऐसा समझा जा सकता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए है, लेकिन यह जुलूस पंजाब विश्वविद्यालय के लिए भी है, जहां कल सीमा आजाद को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सीमा आजाद ने भेष बदला और वहां जाकर सेमिनार को संबोधित किया। यह जुलूस जय नारायण व्यास जोधपुर विश्वविद्यालय की डॉक्टर राजश्री राणावत के लिए है, जिन्होंने 2 दिन का सेमिनार आयोजित किया और उसमें निवेदिता मेनन को बुलाने की हिम्मत की।
और उसके बाद उन्हें निलंबित किया गया। यह जुलूस उनके लिए है। यह जुलूस हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की नौजवान शिक्षक स्नेह सता मानव के लिए है, जिसने महाश्वेता देवी की कहानी द्रौपदी का मंचन किया और उसके चलते हमले झेले और उसके चलते विश्वविद्यालय की यातना झेली। यह जुलूस झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की उस शिक्षिका के लिए भी है जिसे एक शिक्षक को बुलाने के आरोप में निलंबित किया गया और बाद में दबाव डालने पर उस निलंबन को वापस लिया गया। यह जुलूस FTII के लिए है। यह जुलूस पुणे विश्वविद्यालय के उन लोगों के लिए है जिन पर अभी हमला किया गया। यह जुलूस भारत के हर परिसर के छात्र और शिक्षक के लिए है। और हम यह कहना चाहते हैं कि भारत के छात्र और शिक्षक इतनी आसानी से अपने जानने का हक, अपने ज्ञान का हक किसी को सुपुर्द करने वाले नहीं। कोई भी हमारा अभिभावक नहीं हो सकता, किसी को राष्ट्र ने अपनी तरफ से नियुक्त नहीं किया है कि वो बताए कि राष्ट्रवाद क्या है। किसी को पुलिसिंग का अधिकार नहीं है, किसी को अदालत के फैसले लागू करने का अधिकार नहीं है। यह देश और इस देश का हर विश्वविद्यालय और इस देश का हर कॉलेज, वहां जाने का हक उमर खालिद को है। इस देश के हर हिस्से में जाने का हक शैला राशिद को है। इस देश के हर हिस्से में जाने का हक कन्हैया को है। और हम ये जानना चाहते हैं कि वे कौन लोग हैं जो छात्रों को उनके परिसरों में नहीं रहने देना चाहते, और वे कौन लोग हैं जो नजीब के अपने विश्वविद्यालय से गायब हो जाने के बाद जिनके दिल में दुख नहीं होता। वे कौन लोग? वे कौन लोग हैं जो गुरमेहर कौर पर इतने घटिया और गंदे हमले करते हैं? कौन लोग? ये लोग कतई राष्ट्र प्रेमी नहीं हो सकते। ये लोग कतई भारतीय संस्कृति के प्रेमी नहीं हो सकते। ये लोग कतई ज्ञान के प्रेमी नहीं हो सकते। इसलिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यापक होने के नाते गर्व का अनुभव हो रहा है, इसलिए कि हमारे नौजवान छात्र हो गए हैं ज्ञान के पक्ष में, जानने के पक्ष में और ज्ञान के दुश्मनों के खिलाफ। हम मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाना चाहते, हम ये नारा नहीं लगाना चाहते कि कोई बर्बाद हो जाए, लेकिन इस बात को बहुत आसानी से देखा जा सकता है कि किसके पास भाषा है और किसके पास नहीं है। वे लोग जो जुलूस निकालते हैं जूते और चप्पल लेकर, वे लोग जो नारा लगाते हैं कि फला को जूते मारो और चप्पल मारो, उनके पास भाषा नहीं है। और इस जुलूस में भाषा ही भाषा है। तो जाना जा सकता है कि भारत के नौजवान और भारत की संस्कृति की रक्षा करने वाले कौन हैं और भारत में ज्ञान निर्माण करने वाले कौन हैं। लेकिन यहाँ हमें शुक्रिया अदा करना होगा, और मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, इस सरकार का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शुक्रिया अदा करना होगा कि उन्होंने हमें एक बार ये सिखा दिया कि जनतंत्र इत्मीनान से रहने की चीज नहीं है। जनतंत्र का रोजाना अभ्यास करना पड़ता है। जैसे बर्तोल्ट ब्रेख्ट ने कहा था, इंसाफ वैसे ही रोज चाहिए जैसे रोटी चाहिए। उसी तरह जनतंत्र भी रोज चाहिए और जनतंत्र का अभ्यास रोज चाहिए। तो यह जो हम कर रहे हैं सड़क पे उतर के, ये जनतंत्र का अभ्यास है। यह जो हम कर रहे हैं, यह हम ज्ञान को दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बतलाना चाहते हैं, और ये मार्च का महीना है, मार्च के पहले दिन, और फरवरी से यह शुरू हुआ, और फरवरी बदनसीबी से हिंदुस्तान का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण महीना है। फरवरी में शुरू हुआ। So we are joined by Rama, who has joined the march from JNU. So I'll just speak to him about why he is here. तो आपने ये मार्च जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के सपोर्ट में निकाला गया है। मैं देख रहा हूँ कि JNU के भी बहुत सारे छात्र यहाँ पे आए हैं। तो सुनने को मिला है कि ये इंट्रा कैंपस सॉलिडारिटी है कि बहुत सारे कैंपसेस में आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ा हुआ है।
एक पूरा एक कंसर्टेड अटैक है, तो उसके डिफेंस में लोगों ने मार्च निकाला है। तो आप भी उनमें से एक स्टूडेंट थे जिन पे सेडिशन का केस लगा था जेएनयू में 9 पे। तो आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे जो इतने लोग आए हैं और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उसको आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली इस मार्च का सिग्निफिकेंस था? क्योंकि एक मार्च ऑलरेडी निकल चुका है, ये दूसरा मार्च है। DU में एक मार्च निकला था, ये मार्च है, ये पार्लियामेंट पे आप लोग क्यों आए हैं और यहाँ पे आके आपको क्या लगा, कैसा लगा ये स्टूडेंट्स को देख के बात कर? देखिए, एक तो मार्च कैंपस में निकाला गया पिछले दिनों, लेकिन कैंपस का जो मार्च था स्टूडेंट और टीचर दोनों मिल करके निकाले और बोले कि कैंपस के अंदर हम लोग किसी भी तरह का गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग कैंपस के अंदर छात्र और शिक्षक हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाना जानते हैं, इसीलिए किसी को पत्थरबाजी हॉकी स्टिक से मारना या फिर रेप थ्रेट देने का जो कल्चर है वो कैंपस का नहीं है। इसीलिए हम लोग स्टूडेंट और टीचर सिर्फ कैंपस में नहीं, शहर के अंदर भी यही माहौल चाहते हैं, ना विश्वविद्यालय के अंदर ना ही शहर के अंदर किसी भी तरह का गुंडागर्दी या फिर वायलेंस ना हो। इसीलिए सिटीजन्स अगेंस्ट वायलेंस, जो वायलेंस है गुंडागर्दी होलिगनिज्म है, उसके खिलाफ ये मार्च निकाला गया है। और आज सिर्फ कोई 2 कैंपस के स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद नहीं है, सिर्फ DU और JNU का मामला नहीं है, जामिया से, AUD से, AMU से और इवन जादवपुर से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, सोलिडारिटी में तो अलग अलग हिस्सों से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे पहुँचे हैं और सिर्फ स्टूडेंट और टीचर का मार्च नहीं है, पार्लियामेंट्री यहाँ पे मौजूद हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग अभी किसी कैंपस से जुड़ाव रखते भी नहीं हैं, वो लोग भी इसके पक्ष में खड़े हुए हैं। इसीलिए दिस इज नॉट ओनली अबाउट ए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी DU और JNU, इट इज अबाउट ऑल द यूनिवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए कैंपस का जो डेमोक्रेसी है उसको बचाना और कैंपस का जो रवायत है कि भाई चर्चा हो, किसी विषय पे सहमति हो या सहमति ना हो, उसके एस्टेब्लिश करने के लिए ये मार्च बुलाया गया। So that was Ramanaga, who was we are joined by Omar Khalid from JNU. So, many say that this all started after an invitation was extended to you in the Delhi University, but you didn't even reach the event. So why? Do you think it was just because of you? See, that is what it's being made to seem like. But if you see over the past few years in Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad's history in Delhi University, they've consistently done this. This time they made it about me. 2 years back they made it about Nakul's film Muzaffarnagar Baki hai. Now I hear that Venkateshwara College has cancelled its seminar because of this environment affair. AUD has cancelled its seminar. They attacked in Punjab University where Seema Azad was to be the speaker. So it's an attack on all democratic voices, and that's how we have to see this in a larger context. When it comes to me, they are propagating this thing that first they said that I have been indicted by the court, which came out to be a false, a lie. Then they are saying because there is an accusation of sedition against me, there is a criminal charge against me which is pending still. So till the Supreme Court clears me, that's what Satendra Ravanna is saying. Till the Supreme Court clears me, I cannot come to the university and speak. I mean, there are criminal charges against several MPs in the Bharatiya Janata Party. There are criminal charges against the BJP President Amit Shah. Are they stopped from speaking? Actually, anyone who questions power, first they implicate them in false cases, and that's what I call this case that's been put on me. And then they're criminalized. Their ideas are criminalized. Their existence is criminalized. Them participating in normal academic activities is stopped, and that's what we are seeing, and that's what we are protesting against. Okay, so also many people have taken an issue with you raising slogans like Bastar ki Azadi. And can you tell us, did you really do that? And if you did, what did you mean by it exactly? I know you have explained it many times, but can you just walk through? See, one, as far as those slogans specifically that were raised on that day, I could not even reach Ramjas because of all that transpired. So to say that I raised those slogans is not correct. But that does not mean that I do not have an opinion on those slogans. When it comes to Bastar Mange Azadi and Bastar, Chhattisgarh, Jharkhand, Orissa, Maharashtra, these tribal belt, which is what I am doing my research on also, if you see they are the poorest of the poor living over a land which contains very rich mineral resources. And today, I mean, to sort of displace them and take those resources away by creating a regime of plunder and loot and destruction in those areas is what has happened for the past about a decade in all those areas. There is massive level of poverty, there is massive level of malnutrition. There are people who are being put in behind bars, there are fake encounters. NHRC right now said what human rights activists have been saying for a long time, that there have been mass rapes against Adivasi women. So when we talk about Azadi, in the specific context of these areas, it's an Azadi from all these things, and it's an Azadi to live a life of dignity.
And actually, Azadi slogan, whether it comes to Bastar, it comes to Kashmir, it comes to Ramjas, it comes to JNU, it comes to any part of the world, it's essentially a desire to live a life of dignity which is being trampled upon by the present regime. So why do you think the ABVP takes such issue with just the use of that word, Azadi? What does it tell about the current discourse? See, I was reading Venkaiah Naidu's statement. I mean, ABVP, these are all gundas who have a history of beating up teachers and students there. But a senior minister like Venkaiah Naidu, when he says that Azadi will be brought into the sedition law, it makes me laugh at how big a theatre of the absurd is happening in our country. I mean, there are several Supreme Court judgments which very categorically lay down sedition, but today they realize that those the current sedition law cannot implicate us, so they are making the sedition law broad, where anyone and everyone who thinks about anything, they are criminalizing that. As far as their problem with the word Azadi, I mean, they want people to live in fear, and they want people to always move around in fear, that they can be, if they think something, they want to criminalize certain ideas. And when people raise the banner of freedom, from this freedom of an environment of fear, that's what, I mean, they know the regime cannot survive without creating this fearful environment, be it in Bastar, in Jharkhand, in Odisha, or in our university spaces. The resistance is connected to that. Okay, thank you for explaining that, Umar. So that was Umar Khalid from JNU. He just addressed the crowd, the students who are in this march. And right now, there's a lineup of speakers who are going to address the crowd. Students have been continuously raising slogans and protesting. And the march has stopped right outside YWCA because there's heavy police deployment and barricading, and students are not being allowed to go any further. So Jignesh Mewani, the Dalit leader who led the movement in Una, has also joined the protesters here. So he is going to address the crowd. I'll try to show you his speech. रामदास कॉलेज और कुछ कॉलेजेस के छात्र, डीयू के छात्र आपके सामने अपना एक गीत पेश करेंगे, उसके अपनी बात पेश करेंगे, और इसके बाद श्री योगेंद्र यादव जी अपनी बात रखेंगे। दोस्तों, मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र हूँ। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट आई कम हियर विद नो प्रायर पॉलिटिकल एफिलिएशन. I come here as a student. I come here as a learner, someone who is being taught to question, to think, someone who is fighting for a space that is free and democratic. So I want to make it very clear कि मैं ना लेफ्ट से हूँ ना राइट से हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशंस नहीं है। लास्ट ईयर इसी सड़क पे जब JNU पे 9 फरवरी के आगे बढ़ के JNU में प्रोटेस्ट हुए थे, हम सब ने यहाँ खड़े होके बोला था स्टैंड विद JNU, वी आर JNU. This is the time when we all need to realize that like then we are Ramjas this time also, because जो Ramjas में हुआ है वो हम में से किसी से भी हो सकता है, because this is coming, the forces that are attacking us are the forces of a fascist right-wing government which is not going to stop. So we need to show that we are united. और एक चीज मैं बहुत clearly बोलना चाहूँगी is that हमारा underlying जो point है is that we cannot turn violent. Violence in all forms, whether it comes from the right, from the left, is wrong. We have to be united in our non-violence. Through non-violence, we must take out our struggle. जैसे मैम ने बोला कि हम गाने आ रहे हैं, वैसे हम गाने नहीं आ रहे हैं, बट मैं ये भी बोलती हूँ कि गाओ, हंसो, खेलो, सोचो, कूदो, क्योंकि this is our strength. In the face of their violence, in the face of their oppression, we must laugh, we must sing. We must not take out negative naras like मुर्दाबाद, बर्बाद. हम किसी की बर्बादी नहीं चाहते हैं, हम किसी की मुर्दाबादी नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि सब साथ में आए, बातचीत करें, चाहे वो ABVP के हो, राइट के हो, जो भी हो. आप आइए, आप बातचीत करिए. हम खुश हैं. बल्कि बीइंग अ लिबरल आर्ट स्टूडेंट हमें पहले दिन से ये सिखाया गया है कि आप सबकी बात सुनिए, तभी आपके मेंटल होराइजन एक्सपैंड होंगे. हमने रामजस की लिटरेरी सोसाइटी ने उमर खालिद को बुलाया बात करने के लिए. There is absolute, we have every right, every student in this university, every human being in this country has every right to do that, for them to hear another perspective.
हम बस इतना बोलना चाहेंगे छात्र होने के नाते कि हमें बोलते हैं कि छात्र हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हो, पढ़ने जाओ, ठीक है। हम बस यही कह रहे हैं कि आप हमारी समझने की कैपेसिटी पे बार करे जा रहे हैं, आप हमें पढ़ने ही नहीं दे रहे, तो हम पढ़े कैसे? आप हमारे साथ आके सीखिए। उमर खालिद आ सकते थे, वहाँ पे ABVP वालों को फुल इनवाइट दिया था कि आप आइए, उनसे प्रश्न पूछिए, आपके ऊपर कोई वार नहीं होगा, कोई वायलेंस नहीं होगी। वायलेंस कहाँ से आई? ABVP से। हमको समझने दो, हमको पढ़ने दो, हमको ये मत बताओ कि हमें क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। अगर किसी सेमिनार पे वार होता है तो वो अंदर ही अंदर यही बोल रहे हैं कि ये सुनना अलाउड नहीं है, ये कहना अलाउड नहीं है। हमको बस समझने की फ्रीडम चाहिए, और जब हम आज़ादी के नारे लगाते हैं, हमको समझने की आज़ादी चाहिए, हमको पढ़ने की आज़ादी चाहिए, हमें बोलने की आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। एक और चीज़, माफ़ करिए, एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि 22 फरवरी को रामजस के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद हम छात्र 100-200 छात्र गए थे मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन एक FIR दर्ज करने के लिए। तब भी ABVP के लोग मौजूद थे, हमारे चारों तरफ मौजूद थे, पर पुलिस ने हमारे अराउंड पेरिफेरी बना के हमें प्रोटेक्ट करके रखा था। उस भी टाइम ABVP ने अंडे फेंके थे, हम पे पत्थर फेंके थे, पर थोड़े 1 घंटे के बाद करीब सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ गई थी। हम छात्र रिमेन पीसफुल थ्रू आउट, और हमने बोला था कि आप बस एक FIR का नंबर हमें दे दीजिए और हम यहाँ से चले जाएंगे। करीब 6 बजे, अब गौर से सुनिए, करीब 6 बजे आरती मिश्रा जी, वहाँ की SHO आके हमसे बात करने लगी, आरती शर्मा, माफ करिए, आके हमसे बात करने लगी। जैसे ही मैं मुड़ी, पता चला कि आई एम बीइंग ड्रैग्ड डाउन ऑन टू द ग्राउंड बाय अ पुलिस ऑफिसर, अ मेल पुलिस ऑफिसर। मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन पे करीब 40 मिनट के लिए सारे छात्रों को पुलिस से पिटाई हुई। पुलिस ऑफिसर्स ने हमें मारा indiscriminately, not making any difference between men and women. I was personally attacked mostly by male police officers, and this is the first time I think we're hearing of something like this. So we need to realize that we are not just against the ABVP. We are against a state machinery which is systematically orchestrating this kind of violence on students, on our minds, on our hearts. So we need to realize that in this we are all together, people who fight to think, people who fight to question. And one more thing, उस दिन 6 PM के बाद हम सबको पुलिस बसेस में डिटेन किया गया था, बट बाय लॉ ये लिखा गया है कि women are not allowed to be detained by the police post 7 PM. We were not even told where they're taking us. As a first-year student from Ramjas College, an incident like this has opened my eyes. I was there, a prisoner in my own college, my home for the next 3 years. I was there when a friend of mine right next to me had a brick thrown on top of his head. I was there when the police just stood and watched when members of the ABVP came to me and attacked me. The police stood there, they laughed with the members of the ABVP while they attacked us. We are in danger of creating generations of students who can't think critically, who can't think with an open mind, because the ABVP is going to decide what we can do and what we can't do. That, we have to fight that now, and our fight has started from 9th Feb 2016 and it must continue till forever. Until we take down these forces that say we can't talk about this or we can talk about this. And lastly, Ramjas College is my home for the next 3 years. And right now I'm scared of going back to my own college. I was there when female students were threatened with rape. I was there when we were pelted with stones in our own college infrastructure. And now I am here scared to go back to my own college, to study, to learn, to think with an open mind. Our fight is not only against the ABVP, it's against this whole chaplain brigade that decides our syllabus, that is planning on deciding our syllabus. We will continue to fight and we will win. Not with violence. Not with violence, let me tell you this. We will sing, we will dance if we have to, we will do everything, but we will show them the high road and we will win. We will win our campus spaces back and we will defeat them. Thank you. एक चीज़ है जो मुझे बहुत बॉदर कर रही थी और मुझे बतानी पड़ेगी ये बात, क्योंकि मुझे बहुत
मैं बहुत खुद सोची थी इसके बारे में, ठीक है। ABVP आपके दोस्त नहीं है। ABVP आपसे प्यार से बात करेंगे, आपसे बोलेंगे अरे आप ठीक हो, अरे तुम कैंपस वापस आ गए, तुम्हें मतलब कैंटीन में खाना खिलाएंगे, बहुत प्यार करेंगे, पर वो आपके दोस्त नहीं है। वो आपके वो पत्थर फेंकेंगे, वो आपको गालियाँ देंगे, आपको वो पीछे से हमला करेंगे, पर वो आपके दोस्त नहीं है। तो जब आप वापस कैंपस जाए तो आप एक हॉस्टिलिटी बनाए रखें, क्योंकि ये बुखार नहीं है जो हम ठीक हो गए इसके बाद, हम ठीक नहीं हुए। आपके दोस्तों से को मारा गया है, आप पे गाली पड़ी है, आपके प्रोफेसर को गाली पड़ी है, हमारे प्रोफेसर को गाली पड़ी है, ये ठीक नहीं है। तो जब वापस कैंपस जाए तो एक याद रखिएगा क्या हुआ है, भूलिएगा मत। सिर्फ उस दिन जब हमारी पिटाई हुई थी तो सिर्फ ABVP के गुंडे नहीं थे, ABVP ने लोगों को मोबिलाइज किया है, उन्हें समझाया, उनके लिए आसान है ये चीज। हमें आम जनता तक पहुंचनी होगी, उनको समझाना होगा कि नॉन वायलेंस इज द वे टू गो। आप किसी अगर आप मुझसे एग्री नहीं करते तो आप डंडा नहीं उठा सकते हो। प्लीज आप सबसे दरख्वास्त है कि लोगों तक पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे। थैंक यू। Thank you very much, students from Delhi University and Ramjas College. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री योगेंद्र यादव, जिनको काफ़ी पेशेंटली कुछ देर से इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू फॉर योर सॉलिडारिटी। उस दिन भी आप हमारे साथ थे जहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ था ज़बरदस्त प्रदर्शन, आज भी आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। शुक्रिया दोस्तों। ये विद्यार्थियों का, अध्यापकों का, एकेडमिक्स का मार्च है। मेरे जैसे लोगों की हैसियत इसमें सिर्फ एक दोस्त की हो सकती है, और एक दोस्त की हैसियत से मैं 2-4 बात कहना चाहता हूं। पहली बात जो मुझसे पहले कई साथियों ने कही, अपूर्वानंद भाई ने कही, ये मार्च, ये आंदोलन रामजस कॉलेज के बारे में नहीं। रामजस के बाद खालसा कॉलेज, वेंकटेश्वरा, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसके अलावा मैं आपको एक नई बात और बता दूं। मुझे कल दोपहर को 12:30 बजे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में बोलना था। उनकी यूथ कन्वेंशन थी और मुझे टॉपिक दिया गया था, मैंने टॉपिक चुना था मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट इन डेमोक्रेसी। कल रात को मुझे 10:30 बजे ईमेल आया कि वो कन्वेंशन कैंसिल हो गई, और आज मुझे ये पता लगा कि हालांकि वो कन्वेंशन कैंसिल हो गया है जिसमें आप मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट पे बात नहीं कर सकते क्योंकि मामला बड़ा खतरनाक है, उसी कॉलेज में वहीं 2 दिन बाद सुब्रमण्यम स्वामी बोलने आ रहे हैं, उन पे कोई पाबंदी नहीं। तो ये मामला सिर्फ रामजस का नहीं है, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का नहीं है। जैसा भाई अपूर्वानंद ने कहा, ये मामला जोधपुर का है, ये मामला पुणे का है, ये मामला चंडीगढ़ का है, और आज आपको बता दूं ये मामला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में पिछले कई दिन से आप सुन रहे थे कि वहां पे महिलाओं पे किस किस तरह की पाबंदी लगाई जाती है, और आज खबर आई कि इन पे पाबंदी लगाने वाले वाइस चांसलर साहब आज बहुत बिजी थे। इस चीज में बिजी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे इलेक्शन रैली कर रहे हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल रैलीज में उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। इस चीज का खतरा है आज इस देश को। तो सवाल सिर्फ रामजस का नहीं है, ये सवाल यूनिवर्सिटी के आइडिया को बचाने का है। सो वी आर फाइटिंग फॉर द वेरी आइडिया ऑफ ए यूनिवर्सिटी। दूसरी बात, मीडिया की बहसों में, टेलीविजन की बहसों में कई बार इसको प्रेजेंट किया जा रहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं होता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे डिबेट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह बहस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बहस जो हम क्लासेस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं, वो बहस ये होती है कि स्टेट क्या लिमिट्स तय कर सकता है। इस पे बहस हो सकती है, मैं कह सकता हूं कि लिमिट यहां है, कोई दूसरा कह सकता है लिमिट यहां पे है, लेकिन इस पे कोई बहस नहीं हो सकती
कि सड़क पे खड़े हुए 5 लोग अपने आप को कोई भी बैनर लेके किसी दूसरे के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कैसे रोक सकते हैं। ये कोई बहस नहीं है, इस पे कभी कोई बहस नहीं हो सकती। ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। तो आज हम यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे झूठी बहसें करने नहीं आए हैं, शुद्ध गुंडागर्दी का विरोध करने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये याद रखें। तीसरी बात, ये बहस राष्ट्रवाद बनाम दूसरे किस्म के विचारों की नहीं है। कभी कभी हमारे दोस्त भी उत्साह में दूसरी बातें कह जाते हैं। ये बहस, ये संघर्ष हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद की आत्मा को बचाने के लिए है। आज इस देश के राष्ट्रवाद को वो लोग हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए एक कतरा खून नहीं बहाया, जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने जनगण मन नहीं गाया, जिन्होंने अपना राष्ट्रवाद का विचार जर्मनी से उधार लिया। ये उधार लेने वाले आज अपने आप के राष्ट्रवाद को हमें सिखा रहे हैं। आज हमें इस देश के राष्ट्रवाद की आत्मा को बचाना है। हमारा राष्ट्रवाद वो उधार लिया हुआ पश्चिम का घबराया हुआ राष्ट्रवाद नहीं है। हमारा राष्ट्रवाद वो राष्ट्रवाद है जिसने हिंदुस्तान के गरीब को अफ्रीका के गरीब से जोड़ा, लैटिन अमेरिका से जोड़ा, दुनिया भर के दुख दर्द से जोड़ा। ये तोड़ने वाला राष्ट्रवाद नहीं है, जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है हमारे मुल्क का। और ये वो राष्ट्रवाद है जिसमें इस देश का राष्ट्रगान लिखने वाला चिट्ठी लिख के महात्मा गांधी को कह सकता था कि ये राष्ट्रवाद तो बहुत अच्छा विचार नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर कह सकते थे ये बात। ये इस देश का राष्ट्रवाद है जो खुले दिमाग से, खुले मन से, खुले आकाश के नीचे बहस करने को तैयार है कि हिंदुस्तान क्या है, हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद क्या है। ये इतने बड़े राष्ट्रवाद के वारिस हैं हम, और आज उस राष्ट्रवाद को बचाने की लड़ाई है। वो जो जोड़ने वाला राष्ट्रवाद है उसका इस उधार और तोड़ने वाले राष्ट्रवाद से बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक दो आखिर में छोटी बात और कहूंगा, बहुत देर हो गई है। दोस्तों, ये बड़ी लड़ाई, इतने बड़े झूठ के खिलाफ लड़ाई आधे सच से नहीं जीती जा सकती। हमें पूरा सच बोलने के लिए तैयार रहना होगा। और पूरा सच ये है, हो सकता है कुछ दोस्तों को पसंद ना आए, लेकिन आपने मुझे 2 मिनट वक्त दिया है, मैं तो उसका इस्तेमाल करूंगा। पूरा सच ये है कि यूनिवर्सिटीज पे ऑनस्लॉट बीजेपी ने उसको पीक पे ले दा दिया है, लेकिन इस ऑनस्लॉट की शुरुआत बीजेपी से नहीं हुई थी। ये ऑनस्लॉट कांग्रेस के जमाने में हुआ था, ये ऑनस्लॉट लेफ्ट के जमाने में हुआ था। पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटीज को तोड़ा गया था, उनको बर्बाद किया गया था, यूनिवर्सिटीज की इंटेलेक्चुअल ऑटोनॉमी को खत्म किया गया था। कांग्रेस ने, ऐसा कोई पाप नहीं है जो बीजेपी आज कर रही है जो कांग्रेस ने नहीं किया हो यूनिवर्सिटीज के साथ। इस देश में अगर हमें यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी की लड़ाई लड़नी है तो हमें सबके खिलाफ लड़ना होगा, खुले मन से पूरा सच बोलना होगा। अर्ध सत्य से आप इतने बड़े झूठ के खिलाफ लड़ नहीं सकते। और एक आखिरी बात जो मेरे कई दोस्तों ने कही है, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं। इस ऑनस्लॉट से, ये जो भारत के विचार पे हमला है, यूनिवर्सिटी के विचार पे हमला है, इसका मुकाबला करने का एक ही तरीका कि हम दिखाएं कि हम बहस करने को तैयार हैं। हम दिखाएं कि हम अपने विरोधियों को बुलाने के लिए तैयार हैं। ये जामिया के बारे में जो बात हो रही है, शायद ये मामला सही नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं बताया जा रहा, लेकिन जो भी फैक्ट्स हों, अगर शाजिया इल्मी चाहती है जामिया में जाके ट्रिपल तलाक पे बहस करना, उनका अधिकार है। उनके अधिकार की रक्षा करना हम सबका धर्म है। बहस होनी चाहिए, हर जगह बहस होनी चाहिए। और हमें आपको ये मिसाल कायम करनी चाहिए। चाहे हमारे पास केंद्र की सत्ता नहीं है, चाहे हमारे पास राज्य की सत्ता नहीं है, चाहे हमारे पास बस ये 10 फुट की जगह हो, इस 10 फुट की जगह में हम सच्ची डिफरेंसेस की रेस्पेक्ट करके दिखाएंगे, अपने विरोधियों का सम्मान करके दिखाएंगे, तर्क का तर्क से जवाब दे के दिखाएंगे, विचार का विचार से जवाब दे के दिखाएंगे। यही यूनिवर्सिटी की आत्मा है और यही भारत की आत्मा है, यही भारत के राष्ट्रवाद की आत्मा है। उसके लिए हम लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जोगेंद्र यादव जी।
साथियों, बहुत सारे संगठनों ने यहाँ पे आके हम समर्थन अपना दिया है। सारे संगठन से हम स्पीकर्स शायद नहीं बुला पाएंगे, समय बहुत कम बचा है। मैं जरा सा नाम बता दूं। ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन, ऑल इंडिया विमेंस एसोसिएशन, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, यूथ फॉर स्वराज, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और अब आपके सामने मैं जिग्नेश मेवानी को बुलाऊंगी, जिन्होंने बेहतरीन लड़ाई चला रहे हैं। और जो सबसे जरूरी लड़ाई है कि इस देश में जो सदियों की, सेंचुरीज की गैर बराबरी है, जो हमारी जाति प्रथा में है, उसको उखाड़ के खत्म करने का जो इन्होंने कोशिश कर रहे हैं और आंदोलन चला रहे हैं, उसके हम सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। जिग्नेश। साथियों, हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सारी की सारी लड़ाई एक मंच पर आई, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी साथी ने भी फरवरी का जिक्र किया कि फरवरी के महीने में गुजरात में 2002 के दंगे हुए, फरवरी में जेएनयू पे अटैक हुआ, फरवरी में डीयू पे अटैक हुआ। तो हम मोदी जी और संघियों को ये कहना चाहते हैं कि फरवरी में वैलेंटाइन डे भी होता है। नहीं बनेगा बिल्कुल। और जो लोग शमशान और कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि आप शमशान और कब्रिस्तान में उलझे रहिए, हम किसी को आई लव यू कहने के लिए फूलों के बगीचे बनाएंगे। साथियों, ये जो संघर्ष चल रहा है इस देश के सारे कैंपस में, ये संघर्ष को देखकर मुझे कभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बंदर और होमो सेपियंस के बीच की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जो तर्क शक्ति को काम पर लगाकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साथ इस समाज के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवालों को उठाकर इस देश की जनता के सवालों को, शोषण हर स्वरूप और हर प्रकार के, हर तरीके से शोषण के मुक्ति दिलाने की दिशा में एक संघर्ष करने के लिए एक प्रगतिशील साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो सवाल खड़ा करते हैं, ये वो लोग हैं जिनका संघर्ष कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों में मानता है। और दूसरी तरफ संघ, एबीवीपी और भाजपा के लोग हैं जो मनुस्मृति के मूल्यों में मांगते हैं। तो ये संघर्ष मनुस्मृति में मानने वाले लोगों का है और दूसरी तरफ ये संघर्ष मनुस्मृति के काट तोड़े जो सोचने वाले प्रगतिशील लोगों के बीच का है। आज मैं यहां इसलिए हूं कि मैं मानता हूं कि शहला रशीद, साथी कन्हैया कुमार और उमर खालिद मेरे हीरो हैं। आज मैं यहां इसलिए हूं कि मैं मानता हूं कि यदि नजीब गायब नहीं होता तो मेरे साथ इस मंच पर खड़ा होता, और यदि नागपुर में बैठे द्रोणाचार्य के इशारों पर दिल्ली में बैठे दुर्योधन और दुशासन ने रोहित वेमुला का अंगूठा नहीं काटा होता तो वो भी यहां होता। इसलिए मैं आज यहां हूं। डेफिनेटली इस इश्यू में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की बात तो होगी। न्यूज चैनल्स में संघी लोग उसका बहुत कन्वीनियंट इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहूंगा, ये किस तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन था जब 2002 के दंगों में 2500 मुसलमानों की कत्लेआम करने के बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी गौरव यात्रा लेकर निकले थे और जो लोग रिलीफ कैंप्स में थे उनके लिए ऐसे कमेंट की थी, ये तो बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री है। दिल्ली की पुलिस जो गुनाह दर्ज करना है कर सकती है। इस मंच पर से मैं कहूंगा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के एग्जिस्टेंस के एवरी पार्टिकल और एटम से हम वाकिफ है, क्योंकि मैं गुजरात से आता हूं और इसीलिए कहता हूं कि इस देश के ललाट के ऊपर लगी कलम की काली तीली है। और ये संघी, एबीवीपी और भाजपा के लोगों को चर्बी इसलिए चढ़ी है कि गौतम अदानी और मुकेश अंबानी के घर का चीज सैंडविच खाते हैं। तो ये ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद की जो लिंक है, इस लिंक को समझकर दलित, आदिवासी, मुस्लिम,
किसान, मजदूर और सारे स्टूडेंट्स एक मंच पर आएंगे और 2017 में गुजरात में भी उनको मजा चखाएंगे और 2019 में भी मजा चखाएंगे। फांसीबाद का एक जवाब, फांसीबाद का एक जवाब, शहला रशीद, कन्हैया कुमार या उमर खालिद को ये इसलिए खामोश करना चाहते हैं कि तीनों मेरे साथ मिलकर संघ और भाजपा को ये पूछना चाहते हैं कि कुत्ती और गधी माता नहीं तो गाय ही माता क्यों? तो ये सवाल खड़े ना हो और उनका मनुस्मृति वाला सनातन धर्म वाला एजेंडा लागू हो और मोहन भागवत के पेट के ऊपर चर्बी चढ़ती रहे, गौतम अदानी गौ माता का नाम लेकर गौचर लूटता रहे, इस देश में गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक और हिमाचल से लेकर कन्याकुमारी तक कॉर्पोरेट लूट चलती रहे, किसानों की आत्महत्या होती रहे, वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन होता रहे, दादरी और गुनार होती रहे, यही वो चाहते। इसलिए वो नहीं चाहते कि उमर खालिद कोई सवाल करे, लेकिन उमर खालिद सवाल करेगा और वो मेरा हीरो, उसको डाल सलाम। और जो डिबेट और डिस्कोर्स से वो यहां बचना चाहते हैं, उमर खालिद मोस्ट वेलकम टू गुजरात। गाय की पूंछ उल्टी घुमाकर संघियों के गले में लटका देंगे, डिबेट तो क्या करेंगे, उनको तोड़ देंगे। तो साथियों, इसी बात के साथ मेरी बात खत्म करता हूं। आने वाले दिनों में हम सभी भाई बहन, सभी स्टूडेंट्स, सभी यूथ हमारे कॉलेज के कैंपस में ये जो दमन हो रहा है उसके सामने तो आज लड़ेंगे, लेकिन कल को कॉलेज के कैंपस से बाहर निकलकर हम लोगों को रोहित वेमुला के साथ भी खड़ा रहना है, नजीब के साथ भी खड़ा रहना है। और जिन जनता के खून पसीने से ये इमारतें खड़ी होती है, अनाज पैदा होता है, उन किसानों और मजदूरों की लड़ाई भी लड़नी है, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में राज सत्ता। जय हिंद। That was Jignesh Mehwani. He's a Dalit leader who led the Una movement, where a lot of Dalits marched to Ahmedabad from Una, where some Dalits were beaten up because in suspicion of carrying cattle, carrying cow, when they were just carrying cattle to carrying dead cattle to skin for leather and other work. So he just said that Umar Khalid is his hero, Shaila Rashid and Kanhaiya Kumar are his hero, and he has welcomed them to Gujarat, and he's also spoke about solidarity between struggles. So there's a long line of speakers here who are going to address the crowd, but I think the event is coming to an end, so I will sign off now. Thank you for staying with me throughout this coverage. You can read more articles and analysis and ground reports on our website on this on the previous marches and also what has been going on in the university campuses. Thank you for joining me.